Guys, hope you all are doing good. And the NMIMS results were out yesterday. A lot of you have got calls from Hyderabad and Bangalore and Mumbai. I've already made the Mumbai video last night, very well, and students demanded, sir, we want to know about the Hyderabad and Bangalore campus also. So let's have a quick review. Students' activities. This is for the NMIMS Hyderabad, by the way. The one thing which is good about NMIMS is basically it's more of a student activity driven. So you will see a lot of committees out there. You will see a lot of committees taking parts in different activities. So that's something which is going to be there. So if you're somebody who would love to do that extracurricular and all, it's going to be fun for you. Again, it's a student activities club. भर के मिलेगा आपको वहाँ पे. Diversity के बारे में बात करेंगे. I think it's a pretty good. It's sort of decent on the diversity as far as the geographic diversity is concerned. We can check the reports. I mean, again, this has now become a little bit important to see, what all places people are joining from. This is the important slide for us. This is for batch 18-20. WorkX thing. I'm very sure freshers यहाँ पे ज़्यादा होंगे. Indeed, there are like 53% freshers out here. 1 year WorkX is 17%. So I'm sort of going to club this up. So around about 70% people you can see from freshers से लेके 6-7-8 महीने का WorkX. I don't see a lot of people with 3 years plus, or like I don't see a lot of people with 2 to 3 years. So you can sort of understand कि यार ठीक है, what category I am actually into. अगर मैं हूँ 2 से 3 साल के WorkX वाला बंदा, and even I am a Hyderabad located guy, probably अगर ये मुझे kind of a bifurcation दिखता है या फिर ये मुझे एक diversification यहाँ पे दिखता है, then I will not be going for it, because definitely I mean like you have only 15% of the बच्चा लोग यहाँ पे who's got 1 to 2 years of work experience. So ये जो stats होता है, ये stats आपको कुछ ना कुछ चीजें बता देता है और इसको follow करना जरूरी होता है guys. So थोड़ा देख लेना यहाँ पे. अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूँ, अगेन IT भर के होगा यहाँ पे. IT के बाद others is the second one. Consulting and research is 15%, which is a good thing. Now specialization के बारे में बात करेंगे. So to my surprise, 49% is for finance, 42% is for marketing. HR and operations के लिए बहुत कम है. So again, now understand this. Like ये जो 9% है, ये आपको एक kind of एक hint देता है कि यार बहुत कम बच्चे यहाँ पे हैं जो HR and operations को prefer करते हैं. And जाहिर सी बात है कि अगर HR and operations अगर students कम prefer करते हैं तो placement norm जो होता है particular college का, they are also not going to be working really hard to get those companies on board. इक्का दुक्का कंपनी आ सकता है to kind of increase the highest package, but you can understand, right? आपका peer learning थोड़ा सा impact यहाँ पे बैठ जाता है because 9% जनता is going to be very low, right? Gender diversity अगर बात करेंगे हम अगर NMIMS के बारे में, I think these guys have been able to perform it very well. It's a 50-50%. I think female are more. Let's see what do we have for 2019 and 2021. Work experience थोड़ा सा reduce हो गया है, right? तो अगर आप देखोगे ना, ये पूरा stats follow होता है. जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये 53% है. 2019 में जो नया बैच था, जो कोविड के टाइम पे जो फर्स्ट ईयर उनका खत्म हुआ था, उन बच्चों का, राइट? तो अगर आप ये देखोगे 19 वाला बैच, यहाँ पे 57% फ्रेशर्स बढ़ गए, बाकी के लोग रिड्यूस हो गए. अगर मैं डोमेन एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, अगेन यहाँ पे इफ आई लुक एट IT इज अगेन लीडिंग आउट हियर विद अदर्स. अभी अदर्स टेलीकॉम मीडिया वगैरह से आते हैं, राइट? जेंडर शेयर ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली. नाउ दिस इज लिटिल surprising because females were leading earlier, but anyway, doesn't really matter. Let's talk about the final placement. Average is 12 lakhs, highest is round about 25, median 10.3. यहाँ पे थोड़ा सा पंगा लगता है मुझे because okay, so you're saying that your highest is 25 and your average is 12, median is 10.3. ये थोड़ा सा मुझे नहीं सही लग रहा है. I think your average should be round about 9.5. And your median should be around about 10.5 से लेके 10.75, because अगर तुम्हारा highest 25 lakhs है, then not looking good, right? So again, do not go with the highest placement. यहाँ पे एक opportunity मिलता है, मैं मानता हूँ, but मेरे ख्याल से यार average थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है. So but again decent है. ROI के बारे में again मैं कहूँगा कि नहीं देखना better होगा, but मेरे ख्याल से the average package is decent. 100% placement achieved. सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे 31% सेक्टर वाइज ऑफर हुई है. सिंपल सी बात है यार. अगर हम यहाँ पे देखते हैं 37% बच्चा लोग IT से आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो लीड करेगा सेक्टर एज फार एज योर प्लेसमेंट्स आर कंसर्न. और एक चीज देखते थे कंसल्टिंग के लिए. कंसल्टिंग मेरे ख्याल से 13% थोड़ा कम है. ये अदर्स का वही फंडा है. टेलीकॉम BFSI 14% है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर समबडी हु वांट टू गेट इनटू IT, you want to get into role of business analyst, or you want to get into role of, let's say, consultant, right? If you want to get into IT domain of management, right?
then मेरे ख्याल से it makes sense to choose NMIMS Hyderabad. Roles offered के बारे में अगर हम बात करेंगे, marketing analyst, business development associate, financial analyst, these are like entry level roles. Like all the roles that you see out here, these are like entry level roles. I'm not saying this is bad, this is decent, this is more than decent, to be very honest, right? Summer internship के बारे में बात करेंगे, 90,000 is the highest, 23K is the average. Sector wise offers again IT leading है यहाँ पे. अगर आप इनके पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देखोगे, मेरे ख्याल से IT is actually leading. ऐसा नहीं कि बाकी की कंपनीज नहीं आती है. There are good companies from IT background, there are good companies from banking background also. सिंपल सी बात है, अभी दो ही सेक्टर लीड कर रहे हैं. आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आपको दो सेक्टर्स लीड करते हुए दिखेंगे. नंबर 1 is your IT, नंबर 2 is your banking. तो यहाँ पे अगर आपको चलना है, तो अगर आप इन जैसे कॉलेजेस में जाओगे तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा. बट अगेन मेरे ख्याल से जेम टैपनी, IMI दिल्ली, IFMR, KJ सोमैया, वेलिंकर would be a preferred choice यहाँ पे. As far as the brand value is concerned and as far as the ROI is concerned, also peer group के बारे में बात करेंगे और future prospect के बारे में बात करेंगे. I think NMIMS is Hyderabad is a decent one. I'm not saying that should not be taking it up. It's a decent one. You can choose this over and above Christ हो गया, Rizvi हो गया, Thakur हो गया, probably any other regional B schools, whichever part of country you belong guys from. तो मेरे ख्याल से decent है. Again, if you work your way out, if you work harder, then you might bang a package of like 16-17 lakhs यहाँ पे. But आप मोटा मोटी IT की तरफ ज्यादा inclined है. उसके बाद BFSI के लिए तरफ, BFSI में वही होगा यार, वो रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह का होगा. इक्का दुक्का तुम्हें अच्छा खासा प्रोफाइल मिल सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह मिल सकता है. बट अगेन दैट डिपेंड्स. अगेन ये की अकाउंट्स वगैरह ये सब IT वाले रूल्स है. कंसल्टेंट के बारे में भी बात करें, फाइनेंस कंसल्टेंट. सो डिसेंट रोल्स विल बी ऑफर्ड. बट अगेन if you have a better option like what I just told you, you should be considering that. So this is about NMIMS Hyderabad. It's a decent college. Again अगर मैं सिम्बाइसिस के बारे में बात करूँ तो okay, rather than joining SSBF, NMIMS Hyderabad मुझे अच्छा लगता है. ये बाकी I mean SCIT I will still prefer little bit better. SIC SR को छोड़ के आप ये ज्वाइन कर सकते हो. जहाँ तक हम सिम्बी के क्लस्टर के बारे में बात करते हैं, और जो भी बाकी के जो भी छोटे मोटे कॉलेजेस है सिम्बी में, वो छोड़ के आप NMIMS हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हो. डेफिनेटली आप SIOM चूज करोगे ओवर एंड अबव NM हैदराबाद. आप SIDTM करोगे ओवर एंड अबव NM हैदराबाद. SIMC आप चूज करोगे ओवर एंड अबव NM हैदराबाद, अगर आपको मार्केटिंग में या फिर मास कॉम में चलना है तो. राइट, ये एक बात होगी. वेलिंकर बैंगलोर and Hyderabad, I think वो कट टू कट चलेगा. It's not that a major difference as such. So try and understand कि क्या यहाँ पे peer group है, क्या placements है, क्या profiles है, and then take a call. If you still have any questions, put the comment on the video. I'll be more than happy to answer that. And guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video, guys. Bye bye.